स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो टाटा स्टील यूरोप के ऑपरेशन में मैसिव टर्न अराउंड आया है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा स्टील यूरोप के जो एबिटा प्लस टन है वो उन्होंने इस बार अपनी पेरेंट के लेवल्स को पहली बार क्रॉस किया है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से स्टेप्स आपने लिए, कौन से फैक्टर्स से जिसकी वजह से टाटा स्टील यूरोप में इतनी स्ट्रांग ऑपरेशन दिखाई दी। थैंक यू अजय। यूरोप में हम लोग बहुत सालों से बहुत काम कर रहे हैं एंड वी बीन फोकस्ड ऑन लॉट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी। और पिछले साल में हम लोग वी हैव आल्सो स्प्लिट द बिजनेस फोकसिंग सेपरेटली ऑन यूके एंड नेदरलैंड्स। तो वी हैव अ शार्पर फोकस एज टाटा स्टील टुडे। वी रन द कंपनी एज वन कंपनी विद 5 sites, 2 in Europe and 3 in India. So there is certainly a sharper focus at the local level and at the corporate level. Second point ये है कि last year I mean, if हम लोग के European business में almost 80% of the contracts are quarterly, half yearly or annual. 30% of the contracts are annual contracts, 30% are half yearly, and the balance are quarterly. So last year when steel prices went up, हम लोग को benefit नहीं मिला क्योंकि we were committed to our customers at prices contracted earlier. And December, January में हम लोग का नया contract शुरू हुआ है, and you're seeing the benefit of that. That's why quarter on quarter, if you see European realizations have continued to go up, and so it was for the last quarter also. But having said that, I must also say that some of the contracts are up for renegotiation, so there will be some margin compression in Q2, but overall 30% of the contracts are still annual contracts where we will get the benefit. दूसरा बात ये है कि last quarter में of course we didn't get any cost benefit because the coking coal prices were going up. From Q3 onwards, we should start getting the cost benefit in Europe as well. So better spreads, better impact of long-term contracts, and the continued focus on operating efficiencies have helped us in Europe. जी मिस्टर नरेंद्रन, एक क्वेश्चन रिपीटेडली बात में आ रहा है और वो ये है कि यहाँ से टाटा स्टील यूरोप के एबिटा प्लस टन किस लेवल्स पे सस्टेन कर सकते हैं या क्या रेंज मान के चलना सूटेबल होगा? क्या आप इस पोजीशन में हैं कि ये शेयर कर सकते हैं कि क्या भाई एक्स लेवल या वाई लेवल सस्टेनेबल या इस रेंज पे आप एस्पायर कर रहे हैं कि एफिशिएंसी लेवल्स एबिटा प्लस टन पे बनी रहे? See, certainly आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो लेवल था, हाउ कैन वी सस्टेन दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस? ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट ईयर, इफ यू सी yeah, that is what would be a little bit more realistic, not the last quarter. But last year's EBITDAs on an average is something we'll be looking at. ये दूसरा बात ये है कि आप देखिए तो spreads जो है, earlier we were used to spreads of 225 euros per ton between the raw materials and finished. Today it is in the 400-500 euro per ton range. It's lower than what it was earlier, but I mean it had gone to about 600 euros per ton. So we expect it to be on the higher side, closer to 400 going forward, because beach mein the gas prices have also gone up, inflation is high, so the labor costs are also going up. Most steel companies in Europe are investing in transition to green steel, so ye sab ka cost pressures rahega, and so spreads in Europe should be higher than what we've seen in the past. मिस्टर नरेंद्रन, एक बात निकल के आती है हमेशा, शायद बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड व्यू है। कई बार स्ट्रीट जो है वो सिर्फ स्टील प्राइसेस, ग्लोबल स्टील प्राइसेस के मूवमेंट को देखकर एस्टिमेट करने लगता है कि लार्ज स्टील कंपनीज का आगे आने वाले क्वार्टर्स क्या होंगे, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में जब स्टील प्राइस नीचे आते हैं तो कोकिंग कोल प्राइसेस भी नीचे आते हैं, क्योंकि सारे कमोडिटीज एक साथ मूव करते हैं मोस्टली, और इससे उनकी आप जैसी कंपनियों के रॉ मटेरियल प्रेशर्स भी ईज आउट होते हैं। तो इस बैलेंस, इस इक्वेशन को कैसे देखना चाहिए? तो अजय, one has to keep in mind that there will be a lag. अभी क्या होता है कि steel prices drop. If steel price drops, then input costs have to drop, otherwise the steel companies lose money, right? पर कभी-कभी वो that comes after 1 or 2 months, and then most steel companies will have at least 2 months of raw material stock, because the raw material will be coming from Australia or somewhere else. So because of that, by the time that cost impact flows through, it will be about 3 to 4 months. So today's coal price, which is let's say $230, will help us in September. But if steel price falls, it falls immediately if you have all spot prices.
तो दिस इज द लैग विच आई थिंक पीपल डोंट ट्रैक वेरी क्लोजली। तो आप देखिए तो यूरोप में 80% आर कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक आई सेड क्वार्टरली और हायर। In India, 80% are lower than quarter. So in India, the flow through is faster. In Europe, it is slower. So in a falling market, Europe has some advantage. In a rising market, India has advantage. So these are the nuances which सबको देखना है। दूसरा बात यह है कि if you have a जी higher market share in the more difficult segments like auto, oil and gas, then your prices are a bit more stable than if you're only selling at the commodity end of the grades. So I think there is a fair amount of complexity. Wo I think not everyone tracks that so closely. ये मैनेजमेंट आप सुन पा रहे थे टाटा स्टील की, जो अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, खासकर वो ग्लोबल मार्केट्स में जो यूरोपियन कारोबार है उनका वो काफ़ी अच्छा रहा, बीटा के टर्म्स में उन्होंने बीट किया है। खैर